In India, snakes share a very intricate relationship with people. They have attracted our curiosity for centuries and have been part of our religions and cultures. In some parts, snakes are considered to be sacred and holy and signify power, protection, and fertility. Some believe snakes to be the guardians of the treasure of earth left by the gods themselves. But for some, they're a representation of temptation, deception, and chaos. In many parts of India, like Bengal, goddess Manasa Devi, daughter of Lord Shiva and the Queen of Serpents, is worshipped by people to protect them from the perils of snakebite. Festivals like Nag Panchami are celebrated where snakes are worshipped and offered milk to drink. In India, snakes are not only mere animals, but something more than that. The very same country is also known for the most number of snake bites in the world. Every single year, over 1.1 to 1.7 million people get bit by snakes and 58,000 lose their lives. That is half of the total mortality due to snake bite in the world. Many are left with horrific amputations and permanent disabilities, condemning them to a life of helplessness, forcing them to a future where work is no longer a possibility. Almost 94% bites occur in the rural areas in the most economically productive age group of 30 to 69. I'm your host Harpreet, a wildlife enthusiast and an ardent admirer of one of the most detested animals in the world. I'm on a journey to explore the myths that surround snakes and confronting the deep-rooted fear of this creature. Along the way, I'll delve into the profound issue of snakebite, seeking to understand its true impact. It might not be a guide to understand the problem, but I'm hopeful that it's a start. My quest to understand snakebite brought me to Yamuna Khadar in New Delhi. Yamuna Khadar is a vast expanse of land covering an area of approximately 22,000 bigha. The NH24 divides the Yamuna Khadar from residential neighborhoods of East Delhi. On one side of the road are the residential colonies of Mayur Vihar, and on the other side are the agricultural fields. The people are primarily engaged in agricultural activities. The job of a farmer in itself is filled with risks, and snakes add well onto it. But before diving into the issue of snakebite, I wanted to first understand the situation on ground. So I asked the children playing around about what they think is the role of a snake, as none of them seemed very fond of the animal. According to them, the role of a snake is to bite and kill people. This answer just made me realize that the problem of snakebite has its roots embedded way deeper into the ground. If people don't understand the role of snakes, how can I expect them to understand anything about snakes, let alone snake bites? This is a troubling issue. Further upon talking to the locals, I learned about a guy who catches snakes for the people here, makes his own medicine to treat snakebite, prescribed remedies for it, and even offers the service of sucking out venom from the victim's body. This greatly intrigued me. To understand his ways of treating snake bites, I decided to pay him a visit. This is what he had to say. पहले वही बता दो आप कौन से सांप है? भाई यहाँ तो कोबरा ही ज्यादा मिलते हैं, काले सांप, फनवाले, ठीक है। और उसके बाद दामिन है जो पीली वाली मिलती हैं, गोलियां गड़ा रहे हैं जिस पे दाग लगे होते हैं, वो मिलते हैं। काटे हुए की दवाई भी देता हूँ मैं, ठीक करता हूँ। 3 घंटे की गारंटी की दवाई होगी मेरी। ये नहीं रोटी खवा के भेजूंगा भाई, पानी पिला के भेजूंगा। जो मेरे पास आएगा तब मैं किसी के घर पे नहीं जाता हूँ कि भाई मुझे, मैं सांप का काम जानता हूँ, मैं दूंगा दवाई। जिसकी अटके और फटे मेरे पास आओ, दवाई के पैसे लेता हूँ भाई मैं, अपनी जो मोल लेके आता हूँ, ठीक है नहीं भाई? बस इतना काम मेरा है भाई।
और कैसे दवाई लगती है, कितने समय देसी घी में लगता है मेरी, देसी घी में दवाई लगती है भाई। 1 घंटे में 1 खुराक देता हूँ, गारंटी के साथ दूंगा। ये नहीं कि मैं भाई के गप मार रहा हूँ आपके सामने, अपने हाथ में कटवा के दिखाऊंगा, दूसरे के पे बता रहा हूँ। जैसा मर्जी हो सांप। और दवाई बनाते कैसे बता जना मैं तो मोल लेके आता हूँ भाई, कूटता हूँ अपने घर पे ही, उसके बाद अपनी डब्बी में पैक करा बोतल में और रख लेता हूँ बस। और पंसारी की दुकान पे से लेता हूँ 50 ग्राम 25,000 रुपए की, 19,000 की, 20,000 की, 30,000 की, जैसी लो जितनी लो उतनी पड़ती है। जैसे अपने आप देख लिया हमने कि 100 आदमी की लेनी है तो 30,000 की पड़ेगी, हमें 50 आदमी की लेनी है, 80 आदमी की लेनी है तो 10,000 की, 20,000 की, 15,000 की ये पड़ेंगी। इतनी महंगी हो जाती है। हाँ अच्छा, और अगर काट जाए तो आप खून चूस पूरा लेते हो, उससे खून कुछ चूस होता लेता हूँ, सारा कुछ जहर अपने मुंह से निकालूंगा। और बताओ। है? निकल जाता है। हाँ और एक बार फिर से बताना दवाई बनाते कैसे। दवाई कूट के दस्ताने में, जैसे नाम दस्ता होता है वो, उसमें कूट के बनाते हैं भाई। क्या चीज़ होती है उसको पूछते हो। जड़ होती है। अच्छा, तो यही मिलती है वो ना जड़? ना ना, पंसारी की दुकान पे, वो भी लाइसेंस पे मिलती है मेरे पे। अच्छा, उसका लाइसेंस लगता है। हाँ मेरे पे लाइसेंस है भाई, हमारे 9 आदमियों का। सो 9 आदमी तो सब हाँ करते हैं। लेकिन हमारा होली की होली पर जो हम पकड़ते हैं सांप के, पैसे लेते हैं। मानो किसी ने खुशी में 10,000 200 दे दिए, 500 दे दिए, 1,000 दे दिए, ठीक है, तो उसके लिए जमा करते हैं हम वहाँ। हमारे उस्ताद के पास पहले ही पता लग जाता है कि इतने पैसे उन्होंने लिए हैं वहाँ, अच्छा, तो उनको लिए हिसाब देने पड़ता है हमको। हम 9 आदमी हैं, 9 आदमी काम करते हैं, तो हमारे जो हिस्से में पड़े चाहे हमें अपनी जेब से देने पड़े, बराबर कर हिस्सा करने हैं। और आपको कभी सांप काटा है? हाँ काटा है, देखो ये उंगली में निशान भी है, इसी बगिया में काटा अभी। कौन सा सांप? पिछली साल कोबरे नहीं, 2 जोड़ा था, नांग नागिन दोनों थे, उंगली वहीं काट दी थी चक्कू से। अब मेरा विश्वास न मानो तो तुम्हें भाई चलो, मैं मोटरसाइकिल बैठा रहा हूँ, अभी तुम्हारे 10 जन पे करवा दूंगा वहाँ सामने। 10 जन जब मानेंगे तब तो तुम मानोगे मेरी बात को कि भाई यहाँ के इनका काटा था, यहाँ हमारे सामने काटा, जरा नहीं बताएंगी। मैं तो नहीं सिखाया है मैंने, ना मैंने कह दी कि भाई ये आए हैं तो इन्हें बता देना तुम। लेकिन ना दवाई खाई ना कुछ खाई, मैंने सिर्फ उनसे कह दिया था 1 घंटे बस मेरे पास बोलो मत कोई। तो जब सांप काटा था कैसा लगा था, क्या? मुझे क्या लगेगा, मुझे चक्कर से आए थे थोड़े से, उसके बाद उंगली काटी थी वहीं रख के बस, और सांप पकड़ा था इस हाथ में ही, उंगली करी थी और मूड पकड़ा रहा था, मसाली वहीं से काट दी थी थोड़ी सी, लगन लचा दी थी और सांप भी पकड़ रखा था। डब्बे में बंद कर दिया, छोड़ के आ गया उधर नाले पर। मारता नहीं हूँ भाई भाई। दोनों नाग नाग? हाँ दोनों को मारते नहीं है हम। कोई कहे कि मार देते हैं कि ये करते हैं फलाना करते हैं, मैं मारता नहीं हूँ भाई। तो आप खुद कैसे पकड़ते हो, हाथों से? ना ना मेरे पास छड़ी है। अच्छा। हाँ छड़ी है, मंगा रखी है मैंने, ऑनलाइन मंगाई थी। 3 साल लगे थे भाई साहब काम सीखने में। और किनसे सीखा था? अपने उस्ताद से, हमारे इधर के ही हैं बधाई होगी, वहाँ से सीखा था। घर पे ही नहीं गया था मैं 3 साल, हमारे माँ बाप ने तो ये सोच लिया था तो मर गया साला कहीं जाके। हाँ मजाक क्या है इसमें, खड़ी है हमारे पास, पूछ लो। सोच लिया था कि मर गया कहीं। जब मैं घर पे गया तो 11 सांप लेके गया था, यहाँ तक यहाँ तक 11 सांप थे मेरे पास। तो जानते हो तुम माँ बाप, जिसको मैं बिछड़ जाता है 3 साल बाद बच्चा मिले तो कोरिया तो भरते ही है यार। मैंने तब भी धक्का मार दिया था, मैंने यार अलग रहो तुम, किसी को मुंह मार दिया तो बहन मर जाएंगे खामा खाएंगे। जब जब कमीज उठाई थी ऐसे पेंट में दाब रखी थी, कमीज उठाई थी जब निकले नीचे, साले दूर हो गए खड़े, कह रहे थे साले क्या लेके आया तू, क्या करके लेके आया। मैं क्या करके लेके आऊँ भाई, जो अपना कर्म था वो सीख लिया, तुमने तो थप्पड़ मार के भगाई दे दिया था मुझे। सांप लगते कैसे हैं? अरे बड़े बड़े मुझे तो बढ़िया लगते हैं भाई, बहुत प्यारे लगते हैं। अपने ले आता हूँ 2-4 दिन रखता हूँ, अपने छोड़ देता हूँ दूध खवा पिला के। एक देखना तो काट के खा लेते हैं, काट के भी वो खाते खुद हैं। काम करते हैं जब बात का। दूध पिलाते हैं? हाँ बस भैया, जो पीता है तो पी ले, पिला देते हैं, नहीं तो 2 दिन 1 दिन बंद करा। जैसे मानो अब तुम्हें हम बंद कर लें, पकड़ेंगे लेके आएंगे, या तुम मुझे पकड़ के ले जाओ अचानक में, तो घबराहट तो हो जाती है। मानोगे नहीं मानोगे इस बात को, तो एकदम तो नहीं पिएगा, नहीं खाना खाएगा कोई, तो उस बात को तो अफसोस सब किसी को होता है। अपना तसल्ली दी उसको, आज नहीं छोड़ेंगे, कल छोड़ देंगे, परसों छोड़ देंगे, ये होता है बस भाई। Many locals avoid hospitals due to social stigma and fear of hospital environments.
lack of resources, and mistrust on medical treatment. Generations of entrenched myths, perpetuated by snake charmers and quacks, further exacerbate the problem, steering people away from proper medical treatment. For us, watching through the black mirror, it's pretty easy to criticize the farmers for not wearing appropriate gears or taking safety precautions. But we can't move forward without acknowledging the profound lack of awareness and education in these areas. Unlike many of us, they don't have the privilege of leisurely Sunday mornings or warm meals waiting for them. They have to think about the survival of their families every single day, and the threat of snakebite often falls to the bottom of their priority list. For an in-depth understanding, I met a local rescuer, Prashant. At the crack of dawn, his phone buzzed with the first rescue call of the day to Baba Haridas enclave in Najafgarh. The call was for a black snake that had taken refuge in an empty plot. But when Prashant showed us photos of the site, it was far from empty. Discarded metal sheets and piles of waste littered the area. Well, waste for one is a treasure for the other, as places like these make up to be a great shelter for snakes. The description given to us seemed to be of a cobra. The Indian spectacled cobra is one of the big four venomous snakes of India, packed with potent neurotoxic venom, enough to put you in a coffin within an hour or two if left untreated. We hurried to the scene, but as soon as I laid eyes on the snake, I knew it wasn't a cobra. पर ये कोबरा तो नहीं है। It turned out to be a non-venomous rat snake, locally known as dhaman or ghoda bacha, one of the most common snakes found in these areas. They are completely harmless and rarely bite, just like any other snake. After securing the snake, Prashant took the time to educate the locals, debunking myths and sharing valuable information about the species. Education is crucial to reducing fear and fostering coexistence with these misunderstood creatures. With the rescue complete, it was time to release the snake back into its natural habitat, far away from human settlements where it truly belongs. Watching an animal return to the wild is always a profoundly rewarding experience, a reminder of the beauty of nature and its rightful balance. Next, it was time for a short Q&A with Prashant. हमारा जो एक रेस्क्यूअर्स की जो लाइफ होती है ना, वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है। हम ऑल टाइम वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर्स की तो खासकर, और क्योंकि हमारी है ना ड्यूटी 24 आवर्स होती है। एक वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर की ड्यूटी, अगर वो एक एनिमल लवर, एक वाइल्ड लाइफ लवर है, तो उसकी ड्यूटी 24 आवर होती है, क्योंकि हमें कभी भी कॉल आ सकता है। स्नेक्स के लिए तो लिटरली हमें कभी भी कॉल आ जाता है, चाहे वो रात के 2 बज रहे हो या दिन के 2 बज रहे हो। ना हम बारिश देखते हैं, ना हम तूफान देखते हैं। हम ट्राई करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितनी जल्दी हो सके हम उस कॉल पे पहुँचे, ताकि जो स्नेक है उसको भी बचा सके और ह्यूमन से जो उसकी लड़ाइयाँ हैं उसको हम कम कर सकें। और रही बात स्नेक से रिलेटेड मिथ्स की, सांपों से रिलेटेड या कोई भी रेप्टाइल, कोई भी वाइल्ड लाइफ है, हर एरिया में उससे रिलेटेड एक मिथ होता है। कई स्नेक्स हैं, जैसे कि स्नेक पूंछ से डंक मारता है, उसमें जहर होता है बहुत ज़्यादा, कि सांप को बीन से हम बुला सकते हैं। सेकंड मिथ, हमारे पास जितने भी रेस्क्यूअर है इंडिया में, सबके हाथों में एक जादू होता है या दवाई होती है जिससे हमें कभी सांप नहीं काटता, बट ये लॉजिकल है। तीसरी चीज कि सांप दूध पीता है। चौथी है ना कि सांपों के लिए दूध बढ़िया है, दूध रख दो सांप आएगा निकल के। लेकिन इन मिथ्स की जो चीजें हैं ना, वो बहुत पुरानी चीजें हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने बनाए थे, जो हमारे जो पीछे के जो लोगों ने बनाया है, वो सोच समझ के कुछ चीजें बनाई थी, जिससे धीरे धीरे हमारे लिए वो गलत, हमारे लिए भी, उन जानवरों के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, सबके लिए वो गलत साबित हो चुका है। Now that I was beginning to grasp the situation, it became crucial to delve deeper and uncover the root causes of this human-snake conflict. Understanding the why behind the issue was the first step towards finding meaningful solutions. To understand this, I went to meet Dr. Gaurav Barhodia,
assistant professor at Ramanujan College, Delhi University. With a PhD in environmental studies, his research focuses on wildlife conservation, ecology, and urban ecology. He has extensive experience in conservation projects and has taught as an educator in multiple institutions. So the most problematic thing is the fear associated with snakes. If we can tackle, if we can reduce this fear of snakes in the people, we can actually talk about the conservation of snakes. Second reason why this conflict is increasing is because of the contracting habitats of, like, the probable habitats of snakes. At present, we don't have good habitats for snakes. Like, even our urban forest, urban parks are not at all a suitable places, because if we talk about the urban forest in Delhi, urban parks of Delhi, the kind of habitat, the kind of vegetation, it's not very snake reptile friendly. So most of the people, the urban planners are focusing more on trees, and rather think, and like, they don't even talk about keeping or promoting shrubs, which are the, you can say, which are the favorable hiding places for snakes. Also, these small shrubs or rockeries are kind of a prey base for the snakes, like small birds, rodents. If we don't have these prey base in the urban setups, we can't actually talk about having snakes in those wild areas. And ultimately, the snake basically come into the urban habitats for easy foods. Right now, our urban setups are so much abundant with urban pests like rats, mice, other rodents, squirrels, which are like present in high quantity. So these snakes are attracted to these urban setups for easy foods, and that is the reason this snake conflict is increasing. And if we want to talk about the conservation of snakes in urban setup, the most important thing is we need to finish this fear of snake. People should know what ecological role these snakes are playing in our urban setups. And if we are able to tackle that, we can actually talk about a safe habitat for snakes. So, yeah. Snakes becoming a menace for people around. Is that the only thing they're good for? Or doesn't everything and everyone have a role to play in the grand scheme of things? Surely, snakes also have a role to play. Snakes play a critical role of predator, prey, ecosystem engineer, and provide economic and therapeutic benefits to us humans. Snakes as predators feed on lizards, frogs, insects, rodents, and other small mammals, keeping their population under control. As prey, they serve their role in the food chain. Snakes fall prey to animals like skunks, eagles, mongoose, and even other snakes. They, as ecosystem engineers, help in seed dispersal. Yes, you heard that right. Seeds consumed by rodents are expelled intact when a snake excretes. The rodents consumed by snakes are considered a pest, as they can be carriers of zoonotic diseases like leptospirosis, leishmaniasis, and hantavirus. If the population of rodents were not controlled by the serpents, they would infect us and potentially lead to loss of lives and also destroy the crops of the hard-working farmers. Thus, snakes also contribute to food security. Estimates suggest that nearly 200 million people can be fed by food grains that are destroyed by rodents every year. Offering natural, environment-friendly, and free service to mitigate against rodents, snakes are truly farmers' best friends. My opinions might seem skewed towards the snakes, but that's not the case. I care about people and how snake bites impact them, because without helping people, I can never help wildlife. Who better to understand snakebite than the one who has suffered? To meet our snakebite victim, I went back to Yamuna Khadar. For some privacy and other personal reasons, I couldn't get her to speak on camera, but I did get to know about the incident. It was a late, cold evening when this happened. She was cooking food for everyone on a chula when a cobra came from behind it and just instantly bit her. Everyone around panicked. The local snake rescuer was called to help. Ghee and some local medicine was applied to the wound, and she was asked to chew some neem leaves just to check if she could still taste the bitterness.
but she couldn't. Paralysis had started to kick in, nausea, headache, a sinking feeling followed, and her whole world spun out of control. After 30 agonizing minutes, with the local remedies failing, luckily, her families rushed her to the nearest hospital where she was treated with antivenom. As for the snake, it was caught but not released. It was confined to a tub, covered with a fishing net, until the women recovered, only to be burned alive when she was declared safe. Why was the snake there? Why did it bite the victim? Any possible reasoning was ruled out, and the snake was labeled guilty and punished to be burnt alive. Snakes are revered when it suits us. They are feared when it suits us. And they are seen as pests when it suits us. But when will we let snakes be what nature intended them to be? That's a question each of us must answer. I hope that with this short documentary, I was able to deliver a meaningful message. I apologize if any sentiments were hurt. That was never my intention. But above all, I hope it provides perspective and encourages reflection. I'm not here to classify anything as right or wrong. That's for you to decide. What do I want? I want people to understand snakes and feel fascinated by them. I don't expect people to lose all fear. Some level of healthy fear is important because, after all, a venomous snake can be deadly with just a few drops of its potent venom. Fear is natural, but it should be accompanied by fascination, not some myth you were told. Just like we fear tigers, the apex predators, but we still admire their beauty. We are fascinated by them. I believe we can do the same for snakes. Maybe, just maybe, give them a chance. At least I'll continue working until I see a difference.